yourself and how people perceive you. Essence is your reality. Its truest form. Right. What does ethics mean to you from that perspective? But I think the way you behave or the way you react to in a particular situation, Mhm. or how you handle it consciously. I think maybe Right? That's it. Yeah. Anybody else? Parameters which I believe in, and I operate out of those parameters. That okay, these 10 things should be in different situations. That's not the So your belief systems. It's a system, a set of parameters. Have you defined them? not really, but yes, Top 3 क्या होंगे आपके intuitively? 10 छोड़ दो. transparency and facts. मतलब सही होते जो भी. Another way is simple, जिसमें should not be tricky, fake नहीं होना चाहिए. Fake नहीं होना चाहिए. Okay. Good points. Great. Operating in your defined arena of righteousness, consciousness, and what the society and the country also. What do you mean by righteousness? That what I have defined for myself, that this is right and this is wrong. I mean, Mhm. these are my boundaries, These are your boundaries. and also taking into account the law of the land. The law of the land as well. Yeah. Yeah. What the law of the land says, what is right and wrong, Yeah, so is equally important, right? not ignoring that. Okay. Great. Operating from self-integrity. Yes. Self-integrity. Can you define self-integrity? It's a very strong word. शायद ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे. So, what we do when others are not watching, that is the self-integrity. How would I be if no one is sitting over here? That is self-integrity. How true will I be if I am not being accountable? How true I will be if others are not able to find out? And Being true to yourself. No? being true to ourselves and being Right. vulnerable. If I'm Yeah, I can relate to like how do I act when nobody is watching. Yeah. if I'm sitting in a room alone, with what thought process I'm strategizing my things, I'm deciding the things, that thought process is backed by my ethics, Mhm. I guess. Okay. Some Okay. so something set of is- strong values something which is you have driving imbibed. you to make choices. Yeah. Sorry. In alone, When you're alone. nobody is influencing me. हाँ. At your essence and At your free will. at your free will is a very important word, right? Very, very important word. Free will. Right. And most of the time our will is not free. It is influenced will. And So that people around principles us, which our I'm own not able to. personality, our image, right, can strongly influence our will. Yeah. Sorry. We can say commitment also, Commitment to but to self. But I have decided that, and that is my ethics. So it's Also- my commitment with me, also myself, personal integrity. my personal integrity. So I have committed, or I have think. So I'll do ethically. हाँ ये मेरा सिस्टम है, ये मैं Yes. इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना नहीं चाहूँगा. करना. एक सेट ऑफ वैल्यूज और सिस्टम्स जो बचपन से आपके साथ आए हैं हाँ जी. एंड जिसको whether given a choice still you do not deviate from that, you keep connected to that. Correct. No, absolutely yes. You have grown to with that and कुछ भी हो you still relate back कि वो नहीं करना. नहीं करना. But values, I think, are But more that towards holds- individual person. Ethics is towards the society. मतलब it's like a बड़ा word है ethics जो होता है ना कि it's like कि in society Social as well. sense. हाँ, in society. Some एक Yes. social construct आ जाता है, right? But start तो value से ही होता है. Ethicals for the other peoples, not But for. when I think, I myself compromise this every day. So, is it So that is the next question. is it still ethics, or How is can it be? is it a dual personality? This is exactly the purpose of this session. Right? The good news is that all of you understand this. And only when you're not doing work are you able to reflect on it. कि आप ये concepts बता पा रहे हो, free will, belief system, values, self or personal integrity, right? Responsibility towards society, commitment towards others. We are able to reflect on all of these ideas, and we know they're important. But the moment you get into a work environment,
this starts to shatter. Why does that happen? So you're not the only one, by the way. So why does it shatter? Why is it so difficult to keep our So word? there is a cost to the ethics to maintaining that, you know. A So cost. there is a cost in a way that, I mean, you can call it a cost, but अगर आपको ethical रहना है तो definitely you'll have to. You have to pay the price. You have to Have pay to the pay the price. price, Price is the right Probably word. the I would- ecosystem is such So somewhere. I would say You get- I believe in profit first. The ecosystem is such that you get influenced by it and You get influenced, right? So again, वही इसलिए मैंने बोला कि एक बार अपने एसेंस में आ जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, यू नो, बाकी लोग क्या सोचते हैं. मतलब वो कंट्रोल का बेंचमार्क बहुत लेट हो जाता है हाँ. कि ठीक है ये भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता. So you tend to We be basically figure out that if you have to be successful in this environment, then you will have to compromise something. And I test the limits till not being caught. till the law of the land catches. Catches up on you. मतलब that There's a So delta. there's a sense of, difference between following the law of the land and getting caught while not following it. So what he's saying is कि law of the land no, मालूम you है, keep I will stretching continue it. to You break keep it, stretching it. keep stretching it, keep sweating it till I'm we get caught. caught. And then if we can say sorry and get away, it's fine. If we can pay a fine and get away, fine. Otherwise, for jail. Right. And we have seen a lot of amazing leaders, so-called amazing leaders, either running away from the country or in jail. Latest is S. Kumar's. S. Kumar's as well. 11, about 8,000 crores. Yeah. 8,000 crores. अभी किसी और का भी था. अभी ये अभी जो अपना MLM वाला जो स्कीम है, MBA बंद हो गया ना. इनका भी कोई इशू हो रहा है. MBA को Amway. You know, I was following the Amway story guy. of this guy, Kothari, जो Rotomac का था. He died or he committed suicide last year. So he also had big debts, you know, created through a lot of unethical practices. Inability to say no is Looking That is good. not- no. See, partly it's greed. greed है ना. Greed is वो- a big driver. वो short term profit है and then अपना unethical जो decision. moral compass होता है ना, उसको होल्ड करना हाँ. आसान काम नहीं है. When there is so much desire around you, right? And sometimes there is And pressure. it's easy to be unethical. It's easier It's easier. to be unethical. It's not easy. It's easier. Then and to work hard it becomes more easy, like easier with every it appears It habit. appears. till you fall into a trap habit. where it becomes very difficult to come out. Oh. Right? Being So it's like unethical an abyss. becomes a habit. It's like an abyss, right? So it just keeps tricking you into it. दलदल है. कि एक step नीचे जाते हैं. एक अरे ये तो चल गया यार, और करते हैं ये, अरे ये भी चल Try गया, the next और degree. करते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, right? And I'll share a very small experience from very recent personal experience in our organization, where we found it very difficult to make a decision, right? And we finally, I can proudly say we did the right thing. So अभी आपने 3-4 दिन पहले एक शायद न्यूज़ फॉलो करी होगी कि there was this launch which our Prime Minister did, प्रधानमंत्री संग्रहालय, PM Museum. It's a massive pet project of the Prime Minister, right? And it's a legacy project, मतलब कि, and you have to go and see. It's really amazing. So we were appointed as the branding and marketing consultant about 1.5 years ago. Very high prestige project. पूरा प्रॉपर टेंडर प्रोसेस हुआ है. हमारा पहला गवर्नमेंट टेंडर है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. टफ वन टू गेट. बट उस टाइम पे कोई काम वाम था नहीं, कोविड की वजह से काम धंधा रुका हुआ था. पूरी टीम से बात करी, एक अपॉर्चुनिटी है, पिच करना है क्या. It's like either you're all in or you're out. Half-hearted effort नहीं डालना. Our creativity will be tested. So people said we don't have work. You're anyway paying salaries. Let's work hard. तो somehow वो हो गया. अब हो गया तो काम चालू हुआ. उसके बाद वो करते करते समझ आया कि बस काम ही हो रहा है, पैसे मिल नहीं रहे. Like in most government projects, right? So we had no familiarity. पहली बार कर रहे थे, सुना तो था. Everybody said कि पैसे सिक्योर हैं, मिल जाएंगे कभी. कब मिलेंगे ये नहीं मालूम. छोटी कंपनी है, कैश फ्लो टाइट हो जाता है.
बिल रेज किया तो पहले बिल नहीं रेज करने दिया कि ये ऑब्जेक्शन ये, फिर रेज हो गया, कह रहे बस आ रही है पेमेंट, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। एंड इट वॉज सच अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस गोइंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर टू अनदर टू अनदर, एंड दिस इज द प्राइम मिनिस्टर्स मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट। मैसिव ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंशियल कंट्रोलर की अपनी स्टोरीज हैं, कोई कहता है कि यार पैसा खाता है, इसके बिना कोई बिल क्लियर नहीं होने देता ये, कोई कहता है कि वो पैसा खाता है, जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो एफसी को नहीं बोलेगा। तो हम लोग यार करें क्या, राइट, शुड वी टेक द बेट कि और दें तो किसको दें ये भी नहीं समझ आ रहा राइट, पता चला गलत आदमी को पीएमओ में बैठे हो सो इट वाज अ वेरी ट्रिकी मैटर। और फिर लीडरशिप भी ऐसी कि बहुत हाई फाई लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, द सो कॉल्ड द टॉप टियर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री, जैसे नृपेंद्र मिश्रा जी, वो चेयरमैन होगा, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे बोर्ड में, प्रसून जोशी इफ यू हर्ड ऑफ हिम, एमजे अकबर, सो पीपल लाइक हिम, एंड वी वर लाइक स्टक। तो एक ऐसा मोमेंट ऑफ लैप्स आया जिसमें हमने डिसाइड किया कि शायद देना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, एंड वी वर स्टिल डेलिब्रेटिंग, बट कोई एक्शन नहीं लिया उसने। रात को नींद नहीं आई क्योंकि आज तक कभी दिए नहीं थे पैसे, किसी को नहीं दिए थे, नॉट इवन इन अ कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, देयर बीन पीपल हु आस्क्ड फॉर इट, और जितनी बड़ी कंपनी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मांगेंगे आपसे। सो कंपनीज लाइक, नॉट जस्ट लेमली टेकिंग नेम्स, बट कंपनीज लाइक वॉलमार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इनके प्रोक्योरमेंट वाले सब लेते हैं, इट्स अ नोन फैक्ट, इफ यू आर इन बिजनेस यू विल नो। सो बट वी नेवर गिव। अभी तक तो मोरल कंपास एकदम परफेक्ट था, अब हिलना शुरू हो गया कि कंपनी टाइट हो रही है, कैश फ्लो रुका हुआ है, पैसा आ नहीं रहा, बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन एक पेमेंट भी क्लियर नहीं हो रही, राइट। सो वन स्लीपलेस नाइट देन वी रिकनेक्टेड अगेन विद आवर सीनियर लीडरशिप एंड वी सेड कि कोई इंस्पिरेशन है हमारे पास ऑफ अ कंपनी जो बिना पैसे दिए गवर्नमेंट को काम चलाती है। एक ही नाम आया, टाटा। टाटा उसकी स्टोरी सुन रखी थी, उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी कलेक्शंस की टीम्स बना रखी। वो काम क्या करते हैं कि जहाँ भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रोज़ सुबह वहाँ जाके बैठ जाते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, यहाँ इस डोर पे गए, इस डोर पे गए, इस डोर पे, कुछ काम नहीं हो, वापस घर आ जाते हैं सैलरी पे, अगले दिन फिर सुबह चल जाते हैं, कलेक्शन आंटी, एंड में इरिटेट होके पेमेंट मिल जाती है। वही कॉन्सेप्ट हो गया कलेक्शन वो राइट, अच्छा आपका ये ऑब्जेक्शन आ गया, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्शन रिलीज कराने के लिए गए, फिर वापस आए, सर ये हो गया बट तुम्हारा अब ये इशू है, ठीक है जी, कहाँ इशू, कहाँ जाना है, यहाँ जाना, जाओ घूम फिर के। सो यू नेविगेट एंड वी डिसाइडेड दैट वी विल डू दिस, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द मोरल कंपास, बिकॉज हमें लगा कि एक बार अगर हो गया तो बस फिर तो ब्रीच हो, इट्स अ नेवर एंडिंग गेम, समझ ही नहीं आएगा किसको खिलाना है, कितना खिलाना है, कितना वो खिलाना है और कितनी बार खिलाना है, और फिर वो आदत लत पड़ जाएगी उसकी, एंड देन इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फेस अप टू आवर टीम, दिस इज हाउ वी गॉट द बिजनेस, दिस इज हाउ वी डिड आवर स्टफ। तो परसों रात को एक फैमिली फंक्शन था, तो वो मामा जी थे उसमें, कहते यार वो तूने पीएम म्यूजियम वाला प्रोजेक्ट किया, सो प्राउड ऑफ यू, किसके साथ मिलके किया, डायरेक्ट किया, टेंडर मिला, कैसे मिल गया, मेहनत की है, सो यू नो पैसा खिलाया नहीं खिलाया, तो सडनली द रिस्पेक्ट वाज वाओ, दिस इज लाइक 1% ऑफ द केसेस वेयर बिना पैसे खिलाए टेंडर भी मिला है, पेमेंट्स भी क्लियर हो रही हैं, बहुत स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल से हो रही है, बिल भी नहीं रेज करने देते, उन्हें पता है ये लोग पैसे नहीं खिलाएंगे, तो जितना डिले करें वो करते हैं, राइट। बट वी डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट framework or a system that we had created for ourselves. That gave us a lot of confidence. And once the team started believing in it, तो फिर सबने ये सोच लिया था कि कोई बात नहीं, डिले होगा कोई बात नहीं, रुक के आएगा कोई बात नहीं, धक्के खाने पड़ेंगे कोई बात नहीं, but let's not compromise. And trust me, I have heard this many times, typically in government projects and tenders. So companies with a clean image are deeply respected.
deeply respected, even though the people who are respecting also take money. Hmm. वो भी respect करते हैं आपको, अलग नजरिए से देखते हैं. So it's these tough choices. But you got your payment? We got 2 payments so far. तो सेकंड वाले में तो उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्शंस रेज किए कि जो लॉजिकल भी नहीं थे. बट वी केप्ट नॉकिंग द डोर्स पोलाइटली नाइसली. लाइक अब पैसे देके नहीं, प्यार से भी काम हो जाते हैं कई बार. So that also works, no? You talk nicely to people and they listen to you, they pay you respect. So we said let's find out other methods, other legitimate methods. And there is now, I can talk so confidently about this project, there is no shame. Not an iota of shame with the project. कि हमने कुछ थोड़ा बहुत भी इधर उधर किया. And it's a project worth seeing, you know. So when you see it, you experience it such a wonderful one. A huge sense of pride. So that pride only kicks in when the ethical framework is very, very powerful. उसके बिना pride नहीं आता. I've never heard about people from Reliance saying that they're very proud to be working. They make enough money, lot of money. But every time I meet a Tata person, extremely proud. पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है. Moral compass जो उनका system है वो इतना powerful है. Strong values. बहुत strong और compliance of the values is very strong. Compromises नहीं है. I'll share the Azim Premji case study again. So he was एक ऐसा डिसीजन आया था जब I mean and there have been so many such choices that we have to make. कई बार बड़ी छोटी-छोटी चीजें होती हैं. Sanjeev Bikhchandani from Naukri on a talk said that they chose not to do government work because they Because be of this expected reason. to. Because pay. they're expected to do this. Yeah. But they say they do government work when the government invites them to do work. Exactly. Right. Because your equation is different. At a very small scale, I have had this experience. I My see. whole career of 25 years, I have done only one government project. Okay. Very pet project of Lalu Yadav. Okay. एंड इतनी रिस्पेक्ट मिली कि वो पटना से मेरे को बिल साइन करने के लिए आदमी भेजते थे. आप बिल साइन कर दो, पेमेंट करनी है आपको. अच्छा. Very nice. दे यूज्ड टू सेंड द एमडी फ्रॉम पटना. एक आदमी आता था, साइन करवा के लेके जाता था. और लालू यादव के प्रोजेक्ट में किसने पैसा नहीं खाया? नहीं, हमसे किसी ने नहीं. हमसे नहीं खाया. Right. So it's पेट about प्रोजेक्ट था लालू का. it's about who am I? So many people say that the आपने जो बताया रेलवे ना- बोर्ड में मीटिंग होती थी. There were two very senior people of Lalu Yadav who used to be sitting in the board with the chairman of the railway board. He was specially asked कि दोनों को आप बिठाओगे रेलवे बोर्ड की मीटिंग में जब इस प्रोजेक्ट की मीटिंग होगी. Wow. So that was the control. That was the Control and his also the connect. quality of work you must have been And doing. that is the only project in 25 years when I have done in government. Single project. Yeah. बाकी जब opportunity आई, there was a similar issue. Similar. We said no, we'll not do it. Expectation. We backed out. Yeah, yeah. So watching our work at PM Museum, we got an opportunity from CAG, Comptroller and Auditor General. तो वहाँ पहुँचे, काफ़ी important project. सब कुछ हो गया. Suddenly हमें realize हुआ कि इन्होंने हमारा phone उठाना बंद कर दिया. Because they were just not getting any hints at all. Everything got Purposely. cleared, proposal got cleared. So the expectation was now what next? Right? So दे रहे थे hint. We were refusing to take the hint. Said what next? Sign the proposal. ठीक है करेंगे. You know, no definite commitments. So it's just about the choices you make. You know, at the end of the day, it's not about this is right or wrong. It's about what is your moral compass. You know, does it allow you to sleep peacefully at night? You know, can you face up to your children? Or are you also teaching them the same principles? क्या ऐसे ही चलता है. Right? We expect our children to be ethical, at least with us. Right? But on what grounds? Right? They see how we operate. See, चलता है, acceptable है. Right? So it's a huge responsibility for leaders to find the right role models whenever you are faced with such situations. And not try to test the system. It's not about stretching the system, to be very honest. It's about testing out your own limits. Right? Stretching the system is fine. It's okay. We can all try. You know, but honestly speaking, one of the fundamental reasons why India continues to be a poor country
is because of these ethical dilemmas. जो moral compass है, self integrity है, if you see that in places like Germany and Japan, it's Very extremely strong. high. Extremely high. They're not dependent on any policing to make a choice. कि अगर कोई नहीं देख रहा है रात को आप 2 बजे ट्रैफिक लाइट पे हो तो नहीं क्रॉस करेंगे एंड वहाँ जाके हम उनको रिस्पेक्ट कर पाते हैं वाह यार ऐसा होना चाहिए मेरे इंडिया में बट वो हो ही नहीं सकता बिकॉज our base fabric is corrupted. All of us are corrupted, and we like to stretch the system as much as it can, as you rightly said. But leadership का क्या मतलब? Leadership का मतलब है कि now you are decided to lead from the front on this particular topic. And if you don't, then you can be rest assured that your people will not. और आपकी टीम में अगर कोई एथिकल होगा तो वो कंपनी छोड़ देगा और जो जनरली थोड़ा सा बीच में रहता है वो कहेगा यार यहाँ एक्सेप्टेबल है यहाँ चल जाएगा हर चीज़ में चल जाएगा वो छोटी छोटी चीज़ों में चोरी होनी शुरू हो जाएगी ये बहुत देखा है लॉट ऑफ टाइम्स पीपल टेल मी यार मेरी कंपनी में इतनी चोरी हो गई मैं चुप रहता हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा यू मस्ट हैव गिवन अ हिंट इट्स पॉसिबल एक्सेप्टेबल चोरी करना इस चीज़ की चोरी होगी उस चीज़ की चोरी होगी कम ऑन मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द टॉप दैट इट्स ओके कि हम भी दूसरी कंपनी में थोड़ी बहुत चोरी कर लेते हैं अपने क्लाइंट्स के काम में चोरी कर लेते हैं या प्रोक्योरमेंट में चोरी कर लेते हैं ठीक है ना तो फिर अपने अंदर भी तो होगी फिर चोरी इट बिकम्स अ रेफरेंस पॉइंट दैट बिकम्स अ इंस्पिरेशन दैट बिकम्स लीडरशिप सो लीडरशिप बड़ा भारी भरकम हो जाता है टॉपिक तो एक चीज़ है एथिक्स उसके साथ आपने लीडरशिप कर दिया मतलब कि अब आप डिसाइड करोगे कि आपकी कंपनी का एथिकल कल्चर कैसा है इट्स ऑल अपॉन यू द चॉइसेस यू मेक द वे यू एक्ट इन सिंक विद योर बिलीफ सिस्टम्स और आउट ऑफ सिंक इज व्हाट बिकम्स इंस्पिरेशन फॉर अदर्स आपके लिए क्या इंस्पिरेशन है शुड बी अदर लीडर्स आपको इंटरनल इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी आपको बाहर देखना पड़ेगा looking at people like Ratan Tata or the Tata Group or Azim Premjis of the world as a reference point, as a role model. हैं role models exist करते हैं. But जैसे I know मैं बहुत close friend है मेरा वो टाटा के प्रोजेक्ट करता है अगर खुला पैसा खिलाना पड़ता है. I don't know. मतलब this is so again coming out of mouth of I somebody. faced. हाँ मतलब very close friend, super close friend. देखा ना कि टाटा मोटर्स वेरी सर नहीं लेते हैं Housing. टाटा लेते हैं मतलब आई एम वर्किंग विद द टाटा प्रोजेक्ट्स so मुझे लगा था नहीं पर मुझे मैंने भी थोड़ा बहुत EMIs देनी पड़ी I've started hearing a little bit, right? But this I've started hearing a little bit only in the last 3-4 years, and which basically means कि कहीं कुछ compromise हुए हैं ना, leadership में compromise हुए होंगे. See, Ratan Tata is no longer at the helm of affairs, number one. Right? So he was one of the holders of the integrity point. Right? You had Cyrus Mistry in between. So he got in a lot of people who were more business oriented rather than ethics oriented. अच्छे बहुत अच्छे लोग लेके आया था वो solid बंदे. But they were not custodians. You know, they were commercial people. जो बहुत अच्छे से काम करना जानते हैं, शेयर प्राइस बढ़ाना जानते हैं, वो सब people. So breaks आते हैं systems में. Right? So it's not to say that you can call somebody 100% ethical. It's about what's the dominant culture at a place. And if someone is caught, what level are you willing to compromise to protect that person? Right? Or fire that person, or sack that person. So अब जो आप टाटा के केसेस बता रहे हो अगर कोई whistle blower पॉलिसी हुई निकल के आए तो they'll be sacked, is what I understand. सिद्धार्थ भी लोग whistle blower पॉलिसी बता रहे थे. हाँ जी. मतलब आज I shared that वो ना रेसिपी वाला एग्जांपल जो शेफ ने करा था तो ये हो जाएगी whistle blower पॉलिसी बनाओ कंपनी के अंदर. बड़ा ज़रूरी होता है. So there has to be a reward for ethics, right? And more importantly governance में भी जब हम बात करते हैं कि जो जितने भी बोर्ड्स रहते हैं बोर्ड मैनेज्ड कंपनीज हैं जैसे सिक्योर कहते हैं हम बोर्ड पे हैं तो कहते हैं यार हमारा काम रिस्क मैनेजमेंट नहीं है दैट द कंपनी इज सपोज्ड टू बी वी कांट डिस्कवर व्हेन समबडी इज अनएथिकल सो हमें तो जो डेटा दिया जाता है हम उसको देखते हैं ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देता है रिस्क कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है तो हम उसको देख के ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर करते हैं बट इट्स रियली डिपेंडेंट ऑन द लीडर्स अगेन एथिकल लीडरशिप
और संजीव बिखचंदानी ने एग्जैक्टली सेम चीज़ बोली है परसों. He was also very busy on Twitter when these scandals were coming out. Right? हम कितना भी कुछ भी कर लें, कितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर दें, अगर फाउंडर एथिकल नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता. वो छिपा लेगा. वो प्रेजेंट ऐसे करेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर ही अंदर खोखली हो रही होगी. So it's all dependent on the founder and the ethical leadership level of the founder. सिक्योर ने अपने हाथ बिल्कुल साफ कर लिए. कहते हैं कि अगर कोई विसल ब्लोअर हमें आके बताएगा तो हम उस पर एक्ट कर सकते हैं, बट हमें कैसे मालूम चलेगा? हमने सेंसर थोड़ी लगा रखे हैं कंपनी में. They are not doing forensic audit. So you can't hold the board accountable. Only the leader is accountable, if you ask me. Leaders have to lead by example. There is no other method. You have to be an inspiration for your team. It's a very tough call, by the way. Leaders leave a cue. They leave their trail, they leave their cues. They leave a cue for the team. What is acceptable, what's not Yeah. acceptable. आप अगर अपनी टीम में सबको डांटोगे तो एंगर इज एक्सेप्टेबल इन दिस कंपनी. नेक्स्ट लेवल मैनेजर भी वही करेगा. आप पोलाइटली बात करोगे, यहाँ पर सब पोलाइटली बात करते हैं. Respect. रिस्पेक्ट मिलती है सबको. हाँ, वो लीडर भी रिस्पेक्ट करता है. हाउ डू यू स्पीक टू पीपल ऑफ द अदर जेंडर्स? बिल्कुल वही. हाउ डू यू बिहेव विद देम? Same behavior becomes an acceptable behavior. So imagine the amount of pressure you have on your shoulders. Every single action is being watched and observed. You're constantly under a microscope from your own people. सबसे पहले. Forget about outsiders.